Hello everyone and very good morning. I hope each one of you is fine, good, doing well. So आज के class में we are going to read or not read exactly. We are going to revise laws of motion and also friction. ठीक है? So we will be doing questions which will include both of these portions. ठीक है? चलो. So for today's class, I have selected some concepts first to discuss and together with that, we will be first solving small questions, conceptual questions, and after that, we will move back to PYQs, the one which I shared yesterday in your group. ठीक है? चलो start करते हैं. Done it? Okay. So let's start with this thing. And under laws of motion or under friction, whatever things we are going to read, largely we will encounter these forces. ठीक है? Tension force, normal force, gravitational force, string force, friction force, pseudo force. डन है. इन सारे फोर्सेस का काफी ज्यादा यूज कर रहे होंगे व्हेन वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस. सो लेट्स हैव अ लुक ओवर ऑल दिस थिंग्स. टेंशन फोर्स तुम्हें पता है, whenever there is a string and you have attached any mass to it, then tension arises in the string, and you must be aware of tension always acts away from the body. So tension हमेशा किधर लगता है? Away from the body. डन. जैसे यहाँ पे मैंने दो डायग्राम लिए हैं फ्रॉम एक्सी वर्मा थिंग. So, see here, there is a string. There is one string you can see in the first figure. ये है तुम्हारा एक single string, है ना? This is single one. Done. And in between these strings, what is coming forward? यहाँ पे देखो, ये जो single string है, उसके बीच में सबसे पहले यहाँ पे पुली आया, फिर यहाँ पे पुली आया, और स्ट्रिंग के एंड में दोनों एंड पे masses attached है. Done. So if this pulley is massless and frictionless, जो कि हमें दिया रहता है क्वेश्चन में, अगर अगर पुली रोटेट नहीं कर रहा, pulley is massless and frictionless, in that case we will say कि जो भी portion of a string is passing over the pulley will carry the same tension. So here I will say if here the tension is T, then here also tension is T acting on the pulley. Similarly यहाँ पे भी tension यहाँ पे T है, तो यहाँ पे भी T होगा. And so tension acting on 1 kg mass can be written like this, and here tension acting on 1 kg mass will be T. So tension throughout is same in the first figure. तुम लोग साइमल्टेनियसली मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा और टेंशन क्या आएगा? जल्दी से तुम लोग बताना मुझे. ठीक है? जस्ट टेक 1 मिनट एंड लेट मी नो क्या होगा टेंशन का वैल्यू एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू. यस. Acceleration 5 meter per second square. हाँ हाँ. यस करेक्ट. Tension 5 Newton. 5 न्यूटन. यस करेक्ट. दैट्स ग्रेट. सो यहाँ पे सबने लिखा होगा, अगर देख लो, सपोज कर लो 1 kg मास इज गोइंग डाउन. आई वाज एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम एवरीबडी. प्लीज पार्टिसिपेट. ठीक है? काफी सिंपल है. सो इफ 1 kg मास इज कमिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a, let's say, then this 1 kg will go in this direction with acceleration a. ठीक है? एंड दिस 1 kg कैन ओनली गो इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इस 1 kg का व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, यू कैन क्लियरली सी हियर ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग इज टेंशन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. सो इट्स एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. सो टी इक्वल टू आप क्या लिखोगे? m इंटू ए. दैट इज टी इक्वल टू ए फर्स्ट के लिए. और अगर आप सेकंड के लिए लिखते हो, इट इज कमिंग डाउन विथ ए एक्सेलरेशन, mg will act in the downward sense 10 newton. So 10 minus t again is this is equal to a. T is equal to a, so 2a is equal to 10. So a will be equal to 5 meter per second square. Similarly you can write what tension will be 5 newton, है ना? Now if you look at the second diagram, in second diagram we have two strings, right? One string is this one. Again, all the pulleys are massless
certain tension acting downward. So since this is massless, total force acting on it will be 0. So this has to be equal to 2t. So यहाँ पे tension हो जाएगा 2t. अब देखो second diagram में there is one important thing also. What will be the relation between acceleration of m and 2m? Can you tell me now? क्या होगा? Just look at it carefully and let me know. I'm giving you some time. मुझे figure out करके बताओ कि क्या होगा relation. मैम दोनों मासेस के एक्सेलरेशन का। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. m और 2m के acceleration का relation. Yes. मैम m का एक्सेलरेशन 2 टाइम्स होगा 2m के एक्सेलरेशन से। Yeah, correct, correct. So actually you don't need to apply any mathematics here. Just look at the diagram. बहुत ही logical way में जाओ तुम लोग. जैसे यहाँ पे if I say 2m is going down by distance x, what is the meaning of this statement? Figure wise, diagram wise. So diagram wise, if 2m is going down by x, 2m is directly attached with this pulley hanging down. So this pulley will also come down like this. है ना? If 2m is going down by x, pulley is also coming down by x. And when pulley will come down by x, it will require extra x length here, extra x length here. And this 2x extra length will be coming from where? Because additionally, externally, you are not supplying it any extra length of rope. Whatever rope is done. So if 2m is going down by x, it requires 2x length of a string for this. And that 2x length of a string will be given by this m mass going up along the plane. Okay? So if 2m is going down by x, m will go up by 2x. ठीक है, क्योंकि इधर से कोई एक्स्ट्रा लेंथ रिलीज नहीं हो सकता. दिस इज फिक्स्ड हियर and this string is sort of variable because it is attached to the mass m. So if it is moving up, then it will release certain length. If it is moving down, then it will consume certain length. Then so by looking at such things, you can have, I mean, relation of acceleration. So here acceleration of 2m is what? If it is a, then acceleration of m is what? It is 2m. ठीक है. Similarly, velocity का relation होगा. Now you can simply write free body diagram and you can calculate their acceleration का values. So तुम लोग please इसको करना, ठीक है? When I have just written here the answers, so it is for you to do. I will be sharing the notes. कर लेना, ठीक है? Now this is normal force. Normal force is a very, common force we encounter whenever you are standing or some body is standing on the ground. We or the body is pressing ground downward, and according to Newton's third law, ground pushes us forward, and that we call as normal reaction. So what is the characteristic of it? It always acts perpendicular to the surface, but sometimes perpendicular to the surface we are not able to define. जैसे अगर suppose कर लो there is one pointed end like this and you are keeping a sphere here. ठीक है? So this sphere is also in contact with this table corner, right? But this corner is looking something like this. Point है ना? Point है. And how you will draw normal on a point? There will be infinite number of normals, if I'm not wrong. Because if you're given a point and you are asked to draw normal on that, I mean, there will be so many. Clear hai? So how to draw normal on the surface in such cases? So in such cases, don't draw normal on the surface, rather than draw normal on the body. So यहाँ पे body क्या है? Sphere है. इसका center इधर होगा. So normal will be this. So here normal reaction will act along this direction. ठीक है? So whenever जैसे JEE एडवांस का क्वेश्चन भी था, अगर तुम लोग किए होगे, वैसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, but if rod is kept like this, and then there is another case, rod is kept like this. So in first diagram, I'm calling this one first, this one second. So in first diagram, you can see here, this end of ladder is exactly resting on the wall.
डन. सो ऑन द वॉल सरफेस हियर यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ द नॉर्मल, बना सकते हो ना. बट हियर द लैडर इज रेस्टिंग ऑन अ पॉइंटेड एंड. इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ नॉर्मल ऑन दैट पॉइंट इन दिस केस. So what you will do, simply you will draw normal on the ladder itself. Done. And this will give you the direction of normal reaction. So that is why I included this one. Gravitational में मुझे कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. Simply it acts vertically downward. Nothing else. ठीक है. Now if we talk about a spring force, then a spring force you all must have studied. This is this. And if this is kept on a surface, if you are displacing mass by certain distance x in this sense, then a spring force acts opposite to it. I mean, this is a restoring force. It will try to restore the position of body. Done it? So F equal to आप क्या लिखते हो? Kx minus Kx. There are things like combination of spring in series and parallel. Also, when you are breaking spring into two equal or unequal lengths, then how its spring constant will change. So spring constant basically किस चीज के बारे में बात करता है? How stiff is your spring, right? So if there is one spring whose length is L naught, and let's say its spring constant is K naught. Now what you are doing is you are breaking its length. Let's say we are making it L naught by 2, and then we are making it L naught by 2. What will be its new spring constant? Any idea? 2 cannot. 2 cannot, है ना? So very good. This will be 2 cannot. Why it is becoming? क्योंकि तुम लोग, this is a very general experience. अगर स्प्रिंग का लेंथ छोटा है, उसको खींचने में बहुत मेहनत लगता है. Done. So basically it becomes more harder in that sense, you can say. So this is this. If you are doubling the length, spring constant will become half. Now there is a thing of series and parallel combination. When springs are in series, we add them like what? Anyone? K 3K. No, ma'am. Okay. When they are in series, we add them like in parallel, right? Parallel. So यहाँ पे parallel की तरह add करोगे, they are in series, right? These two springs are in parallel, it will get added like in series 3K. But ये वाला question जो मैंने include किया ना diagram, sometimes how you will identify springs are in series or parallel. So always remember, if uh, if tension is same throughout, if tension is same throughout, then you will say combination is in series. And if displacement is same, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, देन यू विल से दिस इज इन पैरेलल. जैसे पहले दो डायग्राम को देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है सीरीज है, दूसरा पैरेलल है. थर्ड में आ जाओ. जैसे फर्स्ट को मैं सीरीज में बोल रही हूँ, टेंशन सेम होगा ना, दिस इज एक्टिंग एज अ वन स्ट्रिंग, राइट? सो जो यहाँ पे टेंशन है वही यहाँ टेंशन है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग स्प्रिंग इज मासलेस एंड टू द लॉन्ग रोप इज मासलेस, थिंग्स आर मासलेस, टेंशन विल स्टे सेम थ्रू m mass को इधर displace करो by distance x, let's say. So this k will also get displaced by x, 2k will also get displaced by x. So displacement is same. That is why in parallel. Now in this confusing case, if you displace m mass in this direction towards right, k2 will get compressed by x and k1 will get extended by x. But overall magnitude of displacement is same. So this arrangement is in parallel. सो यहाँ पे अगर आपको के इक्विवेलेंट निकालना है, यू विल बी राइटिंग k1 प्लस व्हाट, k1 प्लस k2. somehow I hold my pen so hard that it stops working sometimes, है ना? लिखने की आदत लगता है चली गई, बट दिस मच आई एम राइटिंग, आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस. एनीवे, चलो नेक्स्ट है, तुम लोगों के पास एक क्वेश्चन है. लेट मी राइट इट हियर. यस, चलो जल्दी से मुझे बताओ इसमें क्या आंसर लाओगे, क्या करोगे, पढ़ो और बताओ. मैम इसमें सुपर फोर्स लगा देंगे ना पहले तो, कि स्प्रिंग का भी कुछ है नहीं, स्प्रिंग तो ऊपर जाने के हिसाब से जो टेंशन लग रही है उसी को होगा, तो सुपर फोर्स एक्सपेक्ट में कर देंगे दोनों ब्लॉक का. नहीं, मैं बस सिंपल चीज पूछना चाहती हूँ, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होती है? तो उस पर फोर्स लग रहा है, जो उस पर पुली है उसका जो नीचे वेट लग रहा है. हाँ, वॉट एवर इज टेंशन फोर्स, है ना, वही तुम्हारा क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, है ना? यस, यू आर राइट. ओके, ठीक है. तो तुम लोग इसको कर लेना, ठीक है? आई डोंट नीड टू डू दिस, राइट?
इसको सॉल्व करना। मैं यहाँ पे बस एक चीज, सिंपल चीज ये समझाना चाहती हूँ। whenever you come across a point like what is the reading of a spring balance or what is the reading of there is one more instrument जिससे हम मास को वेट को मेजर करते हैं, that is called some balance, आई एम फॉरगेटिंग इट। सो यहाँ पे जब भी तुम्हें स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताना है, वॉट एवर टेंशन यू आर गेटिंग, सो अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो हियर टेंशन विल बी वो 2T, so 2T will be the reading basically, so you have to calculate in this case 2T। somewhere there is mass measuring instrument जो हम वेट मेजर करने के लिए यूज करते, you stand upon it, it gives us reading। so वहां पे रीडिंग किसके बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। बस दिस वाज माय मोटो। सो इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। Now this is ब्लॉक बाय yeah, ब्लॉक, yes, ये ब्लॉक बाय ब्लॉक वाला खींची ना, डब्बे की वो डिब्बा होता है, बताना होता है डब्बा की, ये वाला जो आपने पहले बोला था, ये वाला नहीं। sorry, आवाज क्लियर नहीं था। और मैं कह रहा था जो आपने अभी क्वेश्चन बताया, ये नहीं, इससे पहले मतलब ब्लॉक बाय ब्लॉक वाला जिसमें 10 मिनट का क्वेश्चन था, मुझे बता दे जो ब्लॉक बाय ब्लॉक करते हैं। Is anybody able to hear him? मुझे आवाज तो आ रही है बट क्लियर नहीं आ रही है। मैम क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है। जो भी कहना चाहते हो एक बार, अगर बोल नहीं पा रहे हो क्लियरली, आई मीन बोल पा रहे हो डेफिनेटली, आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली, दैट्स द केस, सो इन दैट केस यू कैन राइट हियर इन द चैट सेक्शन ऑफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट हो तो मुझे प्लीज बताना। सो दिस इज अ केस, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखना मैं भूल गई, व्हेन आई विल शेयर द नोट्स आई विल राइट इट हियर, ठीक है। सो इसको आगे बढ़ाती हूँ। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता होगा, इफ देयर इज any sort of frame which is accelerating, and if you are writing equation of any body inside this frame, then to write the Newton's laws of things or whatever second Newton law का जो भी equation लिखते हो, for that first you need to apply the pseudo force which is mass of that body into acceleration acting in the opposite sense, so this is pseudo force। ये तब लगाते हैं when you are writing equation from the non inertial frame, when you are writing same equation from the ground you don't need to apply it, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम डिलीट नहीं किया, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, एवरीवन लेट मी नो व्हाट आंसर यू विल गेट फॉर दिस। सो अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन है क्या, देयर इज अ बॉब हैंगिंग, ओके, एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस मैम। ओके, सो a string, second end of a hand of a, in the hand of a man, and who is pulling the string down with an acceleration a here, and then there is another mass m attached to the another end of the string which is making an angle theta with the vertical, you can see here, and whole this arrangement is inside a car which is moving forward with acceleration a, and what we have to calculate, we have to calculate tension in the string। so यहाँ पे देखो क्वेश्चन स्यूडो कॉन्सेप्ट लगाओगे इजी हो जाएगा। सेकेंड थिंग, कंस्ट्रेंट का लिटिल बिट यूज है। सो इफ यू सी हियर, इफ यू आर द पर्सन इनसाइड,
Suppose you are pulling this string down by a distance x. तुमने कितना डिस्टेंस नीचे खींचा? x डिस्टेंस नीचे खींचा. So from this side, how much length of a string will go up? If you are pulling it down by x distance, then along this length, how much distance will go up? I mean, total length of a string is something like this. This is the total length of a string. Now you're pulling it down by x. So you मैम are आंसर making, सी है, yes, आंसर yes, सी. yes. So by same length x, it will come down. Then, I mean, if it is coming down by x, then it will go up by x because that same length will fall on the other side to make it go down by x, right? So अगर ये person a acceleration से नीचे की तरफ खींच रहा है, then acceleration of this mass along this length will be a. This acceleration will be what? A. तो अब आप एक काम कर लो, इस m mass का, small m mass का free body diagram बना लो. Suppose I am writing equation from the frame of this car. So first I will apply pseudo force opposite to the direction of acceleration m into a. What else are the forces acting? Mg will act in this sense, and we have one information, that is its acceleration is a in this direction. Also, tension force will act in this direction. So if acceleration is in this direction, it means net force is in this direction. So MA and MG का net force अगर आप इस direction में निकालो, it will be equal to how much? M root under G square plus A square. So net force along M into root under G square plus A square. So correct answer will be C. This is how small thing you can incorporate to solve the questions. ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स ज्यादा जा नहीं रहा है, क्वेश्चन भी काफी सिंपल ही आए हैं लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के. सो वी नीड टू बी क्लियर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अब यहाँ पे तुम्हें मैंने ये डायग्राम इसलिए इंक्लूड किया है सो दैट आई कैन आस्क यू कि मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपके बीच बीच में. अगर इसके इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के लिए हमें दिया गया, हाउ विल डू दिस? यस, सॉरी, या यस. Somebody said something. I'm keeping mic on because so that you can speak, so that you don't. Okay, is my voice lagging for everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just now also? No, ma'am. Okay. So I explained the previous question, right? You all got that. Yes, ma'am. ठीक है. बड़ी परेशान लग रहे हो तुम लोग आवाज से. क्या हुआ? मैम मेरी आवाज अब आ रही है? आ रही है, आ रही है, क्लियर है, बोलो. कुछ नहीं मैम, मैं लास्ट टाइम बोल रहा था आपको सुना नहीं दिया, मैंने अपना वाईफाई फिर बंद करके ऑन किया. सॉरी, लास्ट टाइम. मैम मैं लास्ट टाइम क्या बोल रहा था ना, तो मैं वही मतलब बता रहा था आपको कि जो आपने वो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला क्वेश्चन खोला था ना, हाँ वो हाँ केस, हाँ हाँ. वो केस बता रहा था. ओहो, अच्छा अच्छा. और वो आपको HC वर्मा से ही लिया गया है. अगर तुम हाँ, लोग बुक खोलोगे तो दिख जाएगा. अरे मैम मैंने खरीदी भी नहीं थी खरीदी भी नहीं ऐसी वर्मा, अभी भी नहीं खरीदी है. खरीदूंगा भी नहीं. कोई नहीं, योर चॉइस अगेन. क्योंकि मैम प्रैक्टिस करने को भी बहुत चीजें हैं एक्चुअली. मैम कितनी किताबें पढ़ूं, पक गया मैम पढ़ पढ़ के. जेन्युइन मेंस के लिए मैंने कितनी किताबें सॉल्व करी होंगी. थक गया ज्यादा हूँ पढ़ मैं. लिया तुमने, फिर पढ़ना नहीं. मेरा वाईफाई वापस चला गया. वॉइस आपकी ब्रेक हो गई फिर से. ठीक है, कोई नहीं. पढ़ लिए बट नुकसान नहीं करेगा, चाप मतलब.
एवरीवन हैव ड्रॉन दिस थिंग, सबने बना लिया? सो सिंपल है, यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या लगाओगे? नॉर्मल रिएक्शन, सेंटर से दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी बहुत ही घटिया बनाया मैंने. लेट्स से दिस इज सेंटर. सो फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन इन दिस सेंस, another normal reaction in this sense, then there is tension in this sense, and then you need to break it, I mean horizontal and vertical equilibrium. Consider the geometry, you will be able to do it. इसमें ज्यादा कुछ बताना है नहीं, but this is one more diagram जिसके लिए तुम्हें एफबीडी बनाने हैं. तो देखो यहाँ पे मैं साफ साफ बता ही देती हूँ. देर इज वन हिंज हियर, दिस इज हिंज, ठीक है. सो इन केस ऑफ क्लैम्प एंड हिंज, हाउ वी ड्रॉ द एफबीडी. पुली के केस में भी तुमने देखा होगा, देर इज वन क्लैम्प जिससे पुली अटैच्ड होता है. डन है. अगर इसके दोनों तरफ स्ट्रिंग था, सो टेंशन टी ले लो, टेंशन टी ले लो. एक पुली इज इन रेस्ट, इट मीन्स व्हाट? टी और टी का रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर, root under 2t. Then there must be some other forces acting in this direction, and that force gets acted by clamp. So यहाँ पे जो clamp है ना, वो तुम्हारा adjustable force लगाता है. I mean direction इधर चाहिए, तो इस direction में net force लगा रहा है. इसका मतलब clamp का force दो डायरेक्शन में है. एक है तुम्हारा क्लैम्प का फोर्स हॉरिजेंटल, और दूसरा है क्लैम्प का फोर्स वर्टिकल. सो बेसिकली जो क्लैम्प और हिंज होते हैं ना, दे हैव टेंडेंसी टू एक्ट फोर्सेस इन टू डायरेक्शंस, वन हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल. यहाँ पे हिंज के पास आप आ जाओ. यहाँ पे एक डिस्क है विच इज अटैच्ड विद द हिंज, एंड देन देयर इज अनदर स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड विद द ऑपोजिट पॉइंट. डन है. सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग हियर? अगर फोर्स के तुम बनाओ तो mg डाउन गया, टेंशन अप गया. डन है. T इक्वल टू mg, बट हियर देयर विल बी अदर फोर्स एक्टिंग बिकॉज ऑफ हिंज. तो अगर ब्लाइंडली आपने पढ़ा कि हिंज तो फोर्स लगाएगा, सो एक आप सपोज ऐसे कर दिया आपने n1 फोर्स, एंड देन अनदर इज दिस n2 फोर्स. So vertical equilibrium, if you solve, you will write like T plus N1 is equal to mg. N2 किससे बैलेंस होगा? There is no other force acting in this sense, right? And this is an equilibrium. So N2 को बैलेंस होने के लिए कुछ है नहीं. इसका मतलब यहाँ पे N2 लगेगा नहीं. मैंने बोला ना, हिंज और क्लैम्प का फोर्स एडजस्टेबल होता है. डन है. सो यहाँ पे हिंज सिर्फ एक फोर्स लगाएगा इन द अपवर्ड सेंस. इट हैज टेंडेंसी टू एक्ट फोर्स इन such a way such that it will maintain the equilibrium. तो दो डायरेक्शन होता है बेसिकली. कभी कभी एक डायरेक्शन गायब हो सकता है, जैसा कि यहाँ हुआ. गायब मीन्स इट विल डिसअपियर. ओके, चलो फ्रिक्शन को बेस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, आई ऑलवेज एडमायर दिस क्वेश्चन. यू कैन बेस्ट अंडरस्टैंड फ्रिक्शन थ्रू दिस क्वेश्चन. दैट इज व्हाई आई हैव सिलेक्टेड इट ओवर हियर. सो फर्स्ट 2 minutes आई वांट टू गिव to each one of you so that you can have a look over it, draw the FBD, try calculating. Best understanding you can get. So do it, everybody. ठीक है.
Yes. Am I audible, everybody? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, एक काम करते हैं, साथ में करते हैं. So, केस क्या है? Find the acceleration A1, A2, A3 of three blocks shown in the figure. If a horizontal force of 10 Newton is applied on a 2 kg block, in the first case, what we are doing? We are applying 10 Newton force on 2 kg of the block. And in second case, 3 kg, third case 7 kg, then we have to talk about A1, A2, A3. तो first case लेकर चलते हैं. 2 kg पे कितना force लगा? On 2 kg you are applying 10 Newton. So the moment you will apply 10 Newton, friction will operate. And what is the value of friction here? Friction coefficient is 0.2. Friction will be mu into n. ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन फॉर दिस बॉडी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2 into g के बराबर होगा, दैट इज 2g. सो 20 न्यूटन. फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? 20 into 0.2, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4 न्यूटन. ठीक है. सो एक्सटर्नल फोर्स इज 10 न्यूटन, इंटरनल फोर्स, सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स इज 4 न्यूटन. इट मीन्स बॉडी विल मूव. Then what will be its acceleration? Its acceleration will be 10 minus 4, that is 6 divided by 2. ठीक है. So this is equal to 3 meter per second square. Now what about 3 kg and 7 kg body here? तो आप ध्यान से सोचो, फ्रिक्शन का भी रिएक्शन लगता है ना. सो इफ यू टॉक अबाउट 2 kg and 3 kg, यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज 2 kg. सो ऑन 2 kg बॉडी, फ्रिक्शन फोर्स एक्टेड इन विच डायरेक्शन? On this direction. On this direction. Because of which surface? Because of surface of third. है ना? So if third surface is applying friction on 2 kg body surface, friction force in this direction, in the direction left, then reaction of it will appear on 3 kg body surface also in right direction. So 3 kg body पे भी friction का reaction force आया इधर की तरफ, और वो कितना है तुम्हारा? 4 न्यूटन. देन सो ये 4 न्यूटन 3 kg पे एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है. सो 3 kg पे कितना फोर्स अपीयर हो रहा है? 4 न्यूटन. अब आप देखो, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 3 and 7 kg? बिकॉज externally if you are applying 4 Newton force here, we need to check it will. So 3 kg पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? जब भी ऐसे बॉडीज हो ना, एक के ऊपर एक रखा हुआ हो, तो देखो 3 kg के ऊपर 2 kg रखा हुआ है, तो उसका भी जो वेट है वो 3 kg के सरफेस पे फील होगा. सो ओवरऑल नॉर्मल रिएक्शन विल बी 5g हियर. Done it. So what will be the friction force operating there? So 5g, that is 50 into mu, that is 0.3. So that is 3 by 10. So it is 15 Newton. इसका मतलब बहुत ज्यादा है, राइट? एक्सटर्नल फोर्स तो 4 न्यूटन ही ऑपरेट हो रहा है, फ्रिक्शन 15 न्यूटन है. मींस 3 kg बॉडी विल नॉट मूव ऑन द सरफेस ऑफ 7 kg. मूव नहीं करेगा. तो क्या होगा? इसका मतलब जब दो चीजें साथ में, जब एक चीज दूसरे के सरफेस में मूव नहीं कर रहा हो, I mean there is no tendency of relative motion. In that case, we can consider both body as a system. So here 3 and 7 kg will act as a system because there is no relative motion between 3 and 7 kg surface. ठीक है. So ये बॉडी को अगर आप सिस्टम मान लो, क्यों सिस्टम माना? समझ गए ना? क्योंकि फ्रिक्शन जो ऑपरेट हो रहा है, विच दैट इज नॉट इनफ. I mean, external force is not enough to counterbalance the friction operating. ठीक है. This is 4 Newton. Now this, for this whole system, the surface is this one, and this surface has no friction. It means this whole body will move forward because of this 4 Newton force, without any relative motion happening between 3 kg and 7 kg. So what will be the acceleration here? Acceleration will be what? 4 by 10. So 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दोनों ही 3 kg और 7 kg का सेम एक्सेलरेशन होगा. फर्स्ट केस हमने सॉल्व कर लिया. सेकेंड केस में तुमसे क्या कहा गया है? फोर्स इज एक्टिंग ऑन 3 kg ब्लॉक. सो सेकेंड केस में आ जाओ. 3 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा? 10 न्यूटन. ठीक है. इसके ऊपर था 2 kg और इसके नीचे है हाउ मच इज दैट? 7 kg. And then there is this surface. So
if you are applying 10 Newton on 3 kg, and we already know here friction operating is maximum up to 15 Newton. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब there won't be any relative motion between 3 and 7 kg. Already there is no relative motion happening between 2 kg and 3 kg, है ना, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया हमने. So overall इस पूरे को अब हम सिस्टम मान सकते हैं. So if this whole is a system, then mass of the system is how much? 12 kg. And on 12 kg, 10 Newton force is acting. So this 12 kg is kept on a frictionless surface. Force acting is 10 Newton. So acceleration will be 10 by 12. So that is equal to 5 by 6 meter per second square. Okay. Similarly, if you are applying 10 Newton force on 7 kg block, whole 732 will move as a system क्योंकि तुमने फोर्स यहाँ लगाया. You are not disturbing 3 kg by externally. You are not disturbing 2 kg externally. So no friction will operate between 2, 3 kg, 3, 7 kg. Done. So overall, consider whole as a system. Same answer you will get. So in both cases, answer will be this. ठीक है. I hope you have got it. अब देखो सिंपल है, पुली में जाते ऐसे क्वेश्चन का एक्सेलरेशन तुम लोग निकाला होगा तुम लोगों ने, m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 into g, right? Here I have assumed m2 is greater than m1. ठीक है. सिमिलरली अगर ऐसा मास हो, यहाँ पे m3 डाल दिया, अगेन ऑल दिस होल सिस्टम विल हैव सेम एक्सेलरेशन. जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ये पूरा ऊपर जाएगा. सो इस पूरे को अब आप सिस्टम मान लो, m1 प्लस m3 को एक सिस्टम मान लो, बिकॉज बोथ हैव सेम एक्सेलरेशन. सो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिख सकते हो? m2 माइनस m1 प्लस m3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, सेम वैल्यू को. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुली के एक मास को सिंपली हमने यहाँ से उठाकर ऐसे रख दिया. ठीक है. बट अगेन इफ यू आर कंफ्यूज, यू कैन राइट एफबीडी. इट इज एज सिंपल एज दैट. बट इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, है ना. अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है, इस सिस्टम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं इजिली देखकर. सो दो चीजें होती है. फर्स्ट थिंग इज कि हाउ यू विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. डन है. एंड if there are two bodies hanging, then we need to relate acceleration of both bodies. लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉडी है, there is no tension, then only you need to crack the tension thing. So if you are pulling this string by F force downward, it means tension here is F force. अब देख लो कौन स्ट्रिंग सेम है. सो यहाँ से ये स्ट्रिंग ऐसे चला, ऐसे चला. This is moving like this. This is this. So all this string is the same string. So if tension here is F, then tension here is also F. This is also F. This is F. This is F. And this is also F. And if this is F, this will become 2F, and this will become 2F, and then this will become how much? This will become 4F. So now you know how much force is acting on 10 kg, 5F, and downward 10G. So you can easily calculate what acceleration. ठीक है. So this is how we can deal with system very easily. अब देखो यहाँ पे ये भी एससी वर्मा का डायग्राम है जो कि मैंने उठाया है. अब simply here what I want you to do is to relate the acceleration of bodies. डन है. सिंपल है, मैं तुम्हें समझा ही देती हूँ, तुम लोग इस क्वेश्चन को कर लेना. वैसे let's say 4 kg body or let's say 5 kg body is going down by x distance, then same explanation I will give. If it is going down by x, pulley will also go down by x, and for that it will require extra 2x length. That 2x length this 4 kg will give by going up by 2x distance. So ये 2x ऊपर जाएगा if 5 kg is coming down by x. यानी कि acceleration of 4 is what? 2 into acceleration. I mean, acceleration of 4 is greater than acceleration of 5. And by what times greater? It is 2 times that of acceleration of 5. यहाँ पे भी तुम सेम चीजें कंपेयर कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, सेम रिलेशंस आएगा. सो यू शुड चेक दिस. यहाँ मैंने आंसर्स लिखे. अब देखो यहाँ पे सिंपल है. वी हैव 3 बॉडीज. डन है. हाउ वी विल रिलेट देयर एक्सेलरेशन थिंग्स. आई मीन टेंशन तुम्हें दिख रहा है, सिंगल स्ट्रिंग है. ठीक है. सो टेंशन इज सेम थ्रू आउट. यहाँ पे टेंशन हो जाएगा कितना? 2t. यहाँ कितना होगा? 2t.
and here how much it will be t. Now let's say if 5 kg is coming down by x. If it is coming down by x, then what will happen to this 6 kg mass and 2 kg mass? बताओ. बोलो. और तुम ऑपोजिट चल सकते X हो by तुम. 2. x/2, yes. So that will be the case. स्ट्रिंग को देखते जाओ, खोलते जाओ. ठीक है. आई होप यू मस्ट हैव गॉट दैट आई की कैसे कैसे चीजें देखनी है. यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है, इसका भी एक्सेलरेशन निकालना है. प्लीज तुम लोग निकाल लेना. ये भी एससी वर्मा का क्वेश्चन है, इसका भी एक्सेलरेशन निकालना है. दिस ऑल क्वेश्चंस आर गुड क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इसको भी तुम लोग निकालना, क्योंकि मैं पीवाईक्यू करवाना चाहती हूँ. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन. इसका आंसर है ये. ठीक है. एंड इसका आंसर आई विल बी राइटिंग देयर. ठीक है, व्हेन आई विल से द नोट्स. सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दिस वन. इसका भी तुम लोग इसको भी सॉल्व करना. सिंपल है, एक्सेलरेशन वैसे ही रिलेट होगा. यू कैन डू दिस. सर्कुलर मोशन के लिए आई वोंट एक्सप्लेन एनीथिंग, क्योंकि कुछ जरूरत नहीं है. यू ऑलरेडी नो इफ somebody is going in a circle, then there must be some force acting towards the center, which is always equal to mv square by r. Simple. Then we don't need to do this. Just give me some seconds. ठीक है, 1 मिनट दो मुझे. I will re-share the slide. There is some problem. ठीक है, just okay, it's good to go. चलो, now we will do questions. ठीक है. So क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आए हैं as far as I saw. I mean questions are easier. सॉल्व करने लायक क्वेश्चंस है. So pay your attention, do questions. This is the first one. सबने ट्राई किया होगा आई गेस. टाइम मिला होगा तब. चलो कोई नहीं, यहाँ पे करते हैं. So take your time, do it and let me. So well, is it happening? काफी चुप हो आज. हर्षिता, नो मैम, आयु, हो गया. हो गया ये. जिसमें ए आ रहा था शायद. अच्छा, चलो सही है, सही है, ग्रेट. हर्षिता, यस. हो जाए तो मुझे बता दो, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, है ना. वी शुड वेट और somebody needs time. देखो क्वेश्चन काफी सिंपल है. वेलोसिटी गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स. कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करते जाना है. ठीक है. सो वाई एक्स कैप प्लस 2x वाई कैप. This is basically what velocity given. X cap means I cap it is basically. Y cap means J cap it is, right? So if you have to calculate acceleration, you will do dv by dt. So do this alpha y. Sorry, this is a variable. So dy by dt you will write here. In which direction? X cap direction plus 2 dx by dt. In which direction? Y cap direction. Now write this thing alpha. This is what? This is Vy x cap plus 2 Vx y cap. So Vy is what? Velocity in the y direction. Vx is what? Velocity in the uh, uh, y direction. Vy is velocity in x direction. Vx is velocity y
डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ से तुम चेक कर लो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या था, वाई डायरेक्शन में क्या है। अगर इसको तुम चेक करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट, वन इज अल्फा वाई इन विच डायरेक्शन, एक्स कैप डायरेक्शन। सो बेसिकली दिस इज योर वी एक्स का वैल्यू, ठीक है। एंड देन देर इज अनदर कंपोनेंट दिस वन, so this is 2 alpha x, this is component of velocity in which direction, y cap direction, so this is basically vy। so vx और vy का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। if you are going to put it, so vy का वैल्यू कितना था, vy is how much, 2 alpha x, so this is 2 alpha x x cap plus 2 vx is how much, alpha y y cap, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे एम अल्फा लिख दो, विच इज द करेक्ट आंसर। अल्फा को कॉमन ले लो, एम अल्फा स्क्वायर, 2m अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, सो करेक्ट आंसर इज योर ए, ठीक है। नाउ डू दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो द इजिएस्ट वन दैट यू कैन एनकाउंटर, टेक सम मिनट्स, लेट मी नो। इनफैक्ट बहुत इजी है ना। चलो जिसका आ गया है वो लोग मुझे आंसर बता सकते हैं, आई विल चेक, ठीक है। हर्षिता, यस, वेरी गुड, ग्रेट, एवरीवन। क्रिश, यस, वेरी गुड। अक्षय, यस यस यस, एवरीबॉडी इज करेक्ट, दैट्स ग्रेट। सारे लोग कम फॉरवर्ड। सोहेल, Yes, ma'am. हो गया, Yes, ma'am. हो जाएगा sir. I didn't do well. Too much easy. ओके। वैष्णवी, लावण्य, कुशल, जतिन, हिमांशु, आयुष, एवरीबॉडी, हर्षिता तो बता दिया तुमने, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, टेंशन सेम स्ट्रिंग है, टेंशन क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, बिकॉज दिस इज अ वन स्ट्रिंग, राइट, दिस इज नॉट अ ब्रोकन स्ट्रिंग, वन स्ट्रिंग। यस हिमांशु, सो टेंशन सेम है थ्रू आउट। अब देखो अगर फर्स्ट बॉडी का इक्विलिब्रियम चेक करोगे तो T इक्वल टू mg हो जाएगा, सो T का वैल्यू हमें पता है। √2m का इक्विलिब्रियम अगर आप लिखते हो तो इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा √2mg, टी का कंपोनेंट इधर जाएगा 2t cos थीटा, राइट, एंड इन दिस डायरेक्शन टी साइन थीटा जो कि कैंसिल हो जाएगा। सो 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2mg, t is mg, right, 2mg cos theta is equal to √2mg, you just needed to see tension is same throughout, after that question is done। yes Jatin, चलो ठीक है आगे बढ़ते, sorry, do this question, how many of you did it already? In this portion, facing with calculation. Calculation thing, okay, we will see. Relative concept you can apply, question will be very easy then। हर्षिता किया था, अच्छा आंसर आया था, just go with the relative concept, it will get easier like anything, I would say। आ गया था, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, गुड। चलो जो लोग ट्राई नहीं किए हैं उन लोगों को ट्राई करने का टाइम देती हूँ, टेक सम टाइम, ट्राई इट, लेट मी नो। वसंत, इज इट हैपनिंग? मैडम
सभी लोग करो, इट्स आवर प्रैक्टिस टाइम, डोंट वरी यू आर गेटिंग आंसर्स और नॉट, आई मीन इट्स प्रैक्टिस एंड लर्निंग टाइम। चलो ठीक है, एक काम करती हूँ, लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो देयर आर टू ब्लॉक्स ए एंड बी, इनिशियली दे आर एट रेस्ट। ठीक है, सो मैं सारे वैल्यूज लिखूंगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू ए इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज ऑल्सो 0। ठीक है, now inclination angle is given 45 degree at t equal to 0. What is happening? I mean, initially their separation is also there, root 2 meter. So if I'm saying, let's say this is taken as or this thing, this line I am considering x axis, and let's say this is origin 0 0. So initially sorry, इनिशियली ए कौन से पॉइंट पे है? ओरिजिन पे है, राइट? एंड वेयर इज बी? जस्ट ठीक है। सो बी कहाँ है बताओ? बी इज एट रूट 2 मीटर। ठीक है, सो इनिशियल पोजिशन ऑफ ए को मैं क्या लिखने वाली हूँ? ए को 0 लिखूंगी। एंड व्हाट इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ बी? एक सेकेंड, इनिशियल पोजिशन ऑफ बी इज एट व्हाट? रूट 2 मीटर। ठीक है, दिस इज द थिंग. Now what is happening at t equal to 0? Both the blocks are initially at rest. The coefficient of kinetic friction between the block A and inclined plane is 0.2. So यहाँ 0.2 है, and for this it is 0.3. Initially block is this much behind, block A is behind by root 2 meter of B. When and where their front faces will come in a line. So कहाँ they will come in the same line. Okay, so let's say after t time they are facing each other in this manner, and let's say after some x displacement we have to calculate this thing. Okay, so if you see here, at the time when they are meeting like this, relative displacement of A with respect to B is how much? 0, है ना? We already know, let's calculate initial displacement of A with respect to B, initial. So this will be equal to how much? Minus root 2 meter. SA minus SB karungi main. So this is this. Initial speed of A with respect to B is what? 0. Acceleration nikal lo. Yes, sorry. His time is 2 seconds. Yes. Great. Very good. So, यहाँ से ओके, एक्सेलरेशन चेक करते हैं. सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी हाउ मच? अगर तुम लोग सिंपल इंक्लाइन प्लेन की बात करो, सो फॉर एनी इंक्लाइन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन इफ बॉडी ए इज मूविंग डाउन, then mg sin theta will act downward and friction will act in the up sense. कितना होता है? mu mg cos theta. I'm not going to write the whole thing because you already know these basic things. एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए चलो लिखते हैं. सो दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा, यानी कि z बाई रूट 2 माइनस हाउ मच? म्यू एम जी कॉस थीटा. म्यू इज हाउ मच? 0.2 इंटू 10 इंटू 1 बाई रूट 2. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 8 बाई रूट 2 और समथिंग. चेक कर लेना एक बार. ठीक है, yes, it feels like that. A acceleration of B आप निकाल लो. Acceleration of B कितना हो जाएगा? G by root 2, because both are having same mass, right? Yes. So G by root 2 minus 0.3 into 10 into 1 by root 2. So this will become how much? 7 by root 2. And if we calculate acceleration of A with respect to B, then this will be how much? 1 by root 2. अब आप टाइम निकालो, वेरी इजिली यू कैन कैलकुलेट. इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यूज कर लो. सो व्हाट इज दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ऑलवेज आई से इक्वेशन को ऐसे लिखने से बेहतर है इक्वेशन को हमेशा एस इक्वल टू क्या लिखना है?
is equal to S naught plus UT plus half AT square. So finally SAB is how much? 0. S naught is how much? Minus root 2 meter. Put the value here. 0 equal to minus root 2. ठीक है, और u is how much? 0, so that is also 0, plus half a is how much? 1 by root 2 into t का square. So if you calculate here, t square by 2 root 2 is equal to root 2, so t equal to 2 सेकेंड. अब देखो टाइम तुम्हें मिल गया 2 सेकेंड. अब इस 2 सेकेंड में सेकेंड थिंग क्या निकालना है? वेयर देयर फ्रंट फेसेस विल कम इन अ लाइन. सो कहाँ मिलेगा? इसको हमने 0 0 लिया ना, यहाँ से I mean, when and where their front faces will come in a line. ठीक है. So यहाँ से तुम ये distance अब निकाल सकते हो ना कितना होगा, क्योंकि you already know it has taken how much time? 2 seconds. So now we need to calculate in 2 seconds how much distance A will cover. So in 2 seconds how much distance A will cover? A is equal to, again use कर लो, UT plus half AT square. Don't use the relative thing. Simple इसको use करो. So u initially is 0. Acceleration of a is how much? 8 by root 2. So put करते हैं, चलो put करके देखते हैं. So s equal to half a t square. ठीक है. How much will be the answer? Yes, Himanshu. That will be the answer. So half acceleration is 8 by root 2 था ना, this into t का square, that is 4. So 2 ठीक है. 16 by root 2, that is 8 root 2. So correct answer will be 8 root 2 down 8. ठीक है. So that was the answer. Clear है सबको? क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है. Done it? Only you need to understand things properly, then you will be able to answer it. चलो, now do this question. ये क्वेश्चन भी काफी इजी है. Do it. टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली. सोहेल, एक ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, दूसरा गलत है. अच्छे, आपने एक आंसर सही बताया है, दूसरा पिक करो. सोहेल एक बार ध्यान से सुन, देखो तुमने फर्स्ट आंसर जैसे लाया है ना, उसी में चेक करो कि थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा. ठीक है. वैष्णवी, यस, दैट इज करेक्ट. This is multiple choice basically, so more than one is correct. Pick another one. Vaishnavi, no. Everyone getting this one? Why? तुम लोग ध्यान पे करो. देखो क्वेश्चन में सिंपल है. फर्स्ट तुम लोग ला रहे हो ना, तो सेकंड तो इजीली आ जाएगा. सोहेल, यस, दैट्स करेक्ट. अब आप ध्यान से देखो. देयर इज ए स्मॉल ब्लॉक of 0.1 kg lying on a fixed inclined plane. दिख रहा है. 1 Newton force is acting in this sense through the center of mass. The block remains stationary if now its mass is 0.1 kg. It means in this direction, how much down the plane, how much force will act? 0.1 into g, that is 10 into sine theta. ठीक है. So this much is the force. Done it? How much force will act? Yes, Himanshu. No, Himanshu. First one is correct, second is wrong. So this is this thing. So this force is equal to sine theta. अब आप इस तरफ अगर force लगाओगे,
up the plane, friction is there. No, no, right? It's not there. So एक काम करते हैं, 1 न्यूटन फोर्स पे जाते हैं. 1 न्यूटन फोर्स का कंपोनेंट होगा along the inclined plane and also perpendicular to the inclined plane. So let's check, this angle is also theta, right? So in this direction, how much force will act in this sense? 1 cos theta, ठीक है? And how much force will act perpendicular? Component of 1 will be how much? 1, sorry, it will be in the downward sense. So that is equal to 1 sine theta, and mg cos theta will be in this sense. So again, that is your 1 cos theta, right? ठीक है. अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करो तो क्या होगा? आई मीन वर्टिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करो तो cos थीटा को sin थीटा के बराबर होना है. सिमिलरली पैरेलल वाला भी बात करो तो sin थीटा को cos थीटा के बराबर होना है. सो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री. सो दिस इज एन इक्विलिब्रियम फॉर एंगल 45 डिग्री. अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओके, फ्रिक्शन का ऑप्शंस में दिया है इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. सपोज कर लो थीटा ग्रेटर हो रहा है 45 से. सो व्हेन थीटा विल गेट लार्जर, साइन थीटा विल इंक्रीज. विच विल इंक्रीज? कॉस थीटा विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि कॉस का एंगल, व्हेन एंगल इंक्रीजेस कॉस डिक्रीजेस, राइट? कॉस 0 इज 1 मैक्सिमम. सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग थीटा, व्हाट इज हैपनिंग? साइन थीटा इज इंक्रीजिंग, कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नेट फोर्स किधर है? नेट फोर्स किधर हो रहा है थीटा को बढ़ाने से? Net force will come down the plane, down the plane. And if net force is down the plane, it means friction force will act up the plane, that is towards Q, right? So correct option will be C then, both A and C. Done it? Yes, Ayush, Himanshu, yes. So correct option will be A and C. कुछ नहीं करना था, simple logics, nothing else, right? चलो अब ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे. इसमें भी कुछ नहीं करना तुम्हें, पेशेंस के साथ सारे इक्वेशंस लिखने हैं. So write all equations with patience. पहले तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, एक डायग्राम देखो एंड ट्राई डूइंग इट. सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना तुम्हें, ठीक है? फिर इक्विलिब्रियम को चेक करना. अगेन अगर सारे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से ऑप्शंस नहीं नजर आ रहे तो रोटेशनल यूज करना, ठीक है? और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क उस पॉइंट के अराउंड निकालना जिस पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस जा रहे हो, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबल फोर्स निकालना जरूरी है. उस पॉइंट के अराउंड तो नहीं लोगे क्योंकि फिर तो वो 0 हो जाएगा. सो डू थिंग्स वाइजली. I'm getting third option. क्या?
फिक्स कर सकते हो ऑप्शन को, क्योंकि सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं, करने दो सबको, इसलिए कह रही हूँ। यस, करो, टेक योर टाइम, नो वरीज। सभी लोगों ने एफबीडी तो बनाया होगा ना, कैसा बनाया तुम लोगों ने, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। एमजी डाउन गए होगे तुम लोग, एंड दिस लैडर इज मेकिंग कॉन्टैक्ट एट 2 points, वन ऑन द फ्लोर, अनदर ऑन द वॉल। तो टू नॉर्मल रिएक्शन, लेट्स से दिया हुआ भी है, normal reaction of wall on the ladder is N1, so perpendicular to the wall, that is N1, and here it is how much, here it is N1, sorry N2. Now अगर तुम लैडर रख रहे हो ना ऐसे, तो इट हैज चांस टू स्लिप। स्लिप कैसे होता है, लैडर इस डायरेक्शन में स्लिप होगा, है ना, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, and since when it will slip towards left, top portion will come down like this, so it has tendency to slip down the wall also. So friction, यहाँ पे friction इधर लगेगा, this is F1, and here friction will act in this direction, that is F2। ठीक है, अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करो तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। So translational equilibrium में भी you need to check for two directions, horizontal and vertical here, right? So if I talk about vertical equilibrium, then F1 plus N1, sorry, F1 plus N2 is equal to how much? mg। ठीक है, उसके बाद if you talk about a horizontal equilibrium, then N1 will be equal to what? F2। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचो, एक चीज तो क्लियर है कि हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम के लिए F2 का होना जरूरी है, बिकॉज N1 विल बी देयर, because ladder is in contact with the wall. To the long it is in contact, there is normal reaction acting. So N1 cannot be ever equal to 0. It is always non-zero. And that implies F2 has to be there, right? So mu2 can never be 0. First thing, mu2 can never be 0. जहां जहां पे mu2 0 का ऑप्शन है, आप उसको पहले हटा दो। सो बी ऑप्शन तो पहले कट कर दो, ये होगा ही नहीं। डन है, दिस वॉन्ट बी ट्रू। क्लियर है Tina? Yes, one option is correct, that one will be there। अब आप देखो, अब यहाँ से कोई ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या? अगर म्यू1 को हम जीरो करते हैं, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस में म्यू1 को जीरो किया है, अगर हमने म्यू1 को जीरो किया तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, सो अगर आप म्यू1 को जीरो करते हो तो N2 mg के बराबर दिख रहा है ना, बट वैसा कुछ ऑप्शन में दिया नहीं है। N2 tan theta is this, something of that sort is given। It means we need to now write rotational equilibrium वाला thing। तो आप एक काम करो, अब आप rotational equilibrium की तरफ जाओ। किस पॉइंट के अराउंड में लिखूं? लेट्स से विच पॉइंट शुड आई टेक, बताओ। F2, F2 कैनॉट बी जीरो, राइट? सो ये तो नॉन जीरो है, और यहाँ से दो फोर्सेस पास कर रहे हैं। व्हेन वी विल टेक F1 एज जीरो, तो यहाँ से सिर्फ एक फोर्स पास करेगा, राइट? सो लेट्स टेक दिस पॉइंट, अराउंड दिस पॉइंट वी हैव टू फोर्सेस फॉर श्योर। डन है, सो दो फोर्सेस का टॉप ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। लेट्स कैलकुलेट टॉग अराउंड द बॉटम लाइन। ठीक है, यस सेना, दैट्स करेक्ट। So if you calculate torque around this point, torque of mg will be in this direction, and this torque is equal to mg L by 2 cos theta। कैसे मैंने निकाला? This is theta, this angle is how much? 90 minus theta,
तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एम जी, आर क्रॉस एम जी. आर इज हाउ मच, एल बाई टू. दिस इज एम जी. थीटा इज हाउ मच, 90 minus theta. So sin 90 minus theta will be cos theta. That is why this and this is in this direction. ठीक है. If I calculate torque of N1, then N1 का टॉर्क कितना होगा, इस पॉइंट से N1 कितने डिस्टेंस पे है देख लो. इट इज एट दिस डिस्टेंस. ठीक है, ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है, लेट्स से दिस इज y. ठीक है. सो y बाई एल इज इक्वल टू हाउ मच, y बाई एल इज इक्वल टू cos थीटा. y बाई एल इज हाउ मच, cos थीटा है ना, गलत नहीं हो रहा, sin थीटा है, सॉरी. सो दिस इज sin थीटा. आई एम वेरी गुड एट डूइंग कैलकुलेशन मिस्टेक्स, तो तुम लोग प्लीज देखते जाना, ठीक है, कहीं कुछ उल्टा ना लिख दूं मैं. तो y बाई एल मुझे लिखना था. y बाई एल इज इक्वल टू हाउ मच, साइन थीटा. सो y इज एल साइन थीटा. अगर इसका टॉर्क निकालो तो दिस y क्रॉस n1. ठीक है. सो दिस इज इन दिस सेंस and this angle is 90 degree. So basically torque will be r cross r into force. R is how much, L sin theta. Force is how much, N1. So N1 L, what? N1 L sin theta. And this torque is acting in this direction. और कोई फोर्स बचा है जिसका टॉर्क निकालना है? फ्रिक्शन का टॉर्क होगा, F1 का टॉर्क होगा. F1 का भी चलो निकाल लेते हैं. सो यहाँ F1 ऐसे लग रहा है. डन. So torque around this point will be r cross f. So this distance will be how much? Let's say this is x. X by L will be cos theta. So L cos theta into friction F1. This is the torque. And direction is in which sense? In this sense. So total torque is how much? Torque in clockwise will be equal to torque in anti-clockwise. आप equate कर दो. mg L by 2 cos theta will be equal to n1 L sin theta प्लस F1L cos थीटा. ठीक है. अगर मैं F1 को जीरो लेकर चलूं, लेट्स से म्यू1 इज जीरो, लेट्स से म्यू1 इज जीरो. अगर मैंने म्यू1 को जीरो कर दिया तो इस इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, दिस विल बिकम जीरो एंड देन this L will get cancelled and mg by 2 will be equal to how much, n1 tan theta. ठीक है. सो n1 tan theta is equal to mg by 2 if mu1 is 0. So D is the correct option. ठीक है. अब हमारे पास दो चीजें और है. एक तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, हो गया ना, क्योंकि म्यू1 को जब मैंने जीरो किया and म्यू2 is not zero, then n2 tan theta is not equal to mg by, then क्या है, n1 tan theta is equal to mg by. सो ये भी गलत हुआ, ये सही हुआ. ऑप्शन कौन सा बचा है, सी को चेक करना बचा है. दैट इज म्यू1 इज नॉट जीरो, म्यू2 इज नॉट जीरो. तो हमें इस इक्वेशन में F1 को अब जीरो नहीं करना, या फिर फर्दर कुछ और चेक करो. सो यहाँ पे अगर देखो तो n2 का वैल्यू दिया हुआ है. डन है. सिंपल प्लेन n2 का वैल्यू निकालना है. क्या यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, एक बार चेक करके देखो. कैन वी डू इट? We have to calculate n2, right? Can we do it? Yes. सबका आंसर आ रहा है, चेक करके बताओ. लास्ट ऑप्शन चेक करना है. विल यू डू इट एवरीबडी, so that we can do another question. You just need to put in things here. ठीक है. F1 plus N2 is equal to mg. ये मैंने सही लिखा है ना? हाँ, सही तो लिखा है. F1 plus N2, yes, equal to mg. N1 equal to F2 लिखा है मैंने. N1 is equal to F2, yes. तो अगर वैल्यूज पुट करने हो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? N2 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है mg माइनस F1. ओके, यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते? बताओ, थर्ड ऑप्शन को कैसे चेक करें? मुझे दिख नहीं रहा है अभी, किसी को दिख रहा है? बताओ. मैम फोर्स बैलेंस करो मैम, हो जाएगा. फोर्स को बैलेंस करके हो जाएगा, है ना? कौन हाँ से मैम. वाले कौन से वाले इक्वेशन को यूज करूं? अच्छा, तुम लोग कर मैम लेना फिर. आई मीन फोर्स को ही बैलेंस करना है ना ओनली. हाँ मैम, ओके, सही हो जाएगा. यस.
Yes. Then you will get the answer. No worries. कर लेना तुम लोग, हो जाएगा. चलो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ. वी विल डू मोर 3-4 क्वेश्चंस, वी हैव टाइम, क्योंकि लास्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. लेट्स डू दोस क्वेश्चंस. जस्ट टेक हियर 1.5 मिनट एंड डू इट. It is asking maximum tension that you can sustain, right? Check करो. This is a very simple question. मैंने include किया so that you can get an idea of horizontal circle वाला thing. मैम 36. Yes, correct. Very good. Others? Okay, so question क्या है? There is a ball of mass 0.5 kg that is attached to the string end here. Length of the string is given. This is 0.5 meter. It is said that this string can sustain maximum tension of 324 Newton. The maximum possible value of angular velocity. So how it will move? I mean, it will move in this circle. ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग ऐसे है, बॉल ऐसे लटका हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है. दिस इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम आल्सो. सो हॉरिजॉन्टल सर्कल का केस है. अब देखो, वेन एवर एनीथिंग इज इन सर्कल, one force has to act around this towards the center, and that force will be equal to how much? mv square by r. So let's see यहाँ पे रेडियस क्या है. अगर ये L है, and let's say if this angle is theta and this is radius r, then r by L will be equal to how much? R by L will be equal to sin theta. ठीक है, so r is equal to how much? L sin theta. ठीक है, रेडियस मिल गया हमें. अब आप टेंशन को देख लो. यहाँ पे इस बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन अप और mg डाउनवर्ड. सिंस mg इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, रेडियस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, mg का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं हो सकता. सो टेंशन हैज टू मेक इट गो अराउंड इन अ सर्कल. टेंशन का कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ जाएगा? दिस वन. So if this angle is theta, then vertical force is T cos theta, which will get balanced by mg, and then there is T sin theta additional, which will make this bob go round in the horizontal circle. So T sin theta is the F here, and this is equal to m omega square. क्योंकि ओमेगा निकालना है तो ओमेगा के टर्म में लिखते हैं r. R is how much? L sin theta. So sin theta will get cancelled here. Tension 324. Mass is half. Omega square we have to calculate. This is also half. So omega square is root under 4 into 324. यानी कि 18 into 2 यानी कि 36. ठीक है. Now let's do this question. Again, same as that of बिफोर. जो हमने वॉल का क्वेश्चन किया था ना, ऑलमोस्ट फ्री बॉडी डायग्राम सेम जाएगा. ठीक है, यू जस्ट नीड टू पुट इन द कैलकुलेशन, बट आई वांट यू पीपल टू डू इट. ट्राई करो एक बार और आंसर बताओ. ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर, सो चेक इट.
चलो करो सभी लोग, आंसर मुझे बताना। यस। हो रहा है सबका? कर रहे हो सभी लोग? आई होप कर रहे हो तुम लोग। Okay, should we do it now? What is there? There is a uniform stick of mass this. Okay, मैं करूँ? हाँ, ठीक है। सो 1.6 kg का हेवी बॉडी है, ठीक है। And then reaction force I have drawn here like this. Can anyone check if I am missing on any force here? नहीं ना? Normal reaction I have applied, friction I have applied, and everything is done, right? So if you check here, only thing you have to be careful with, यहाँ पे जो normal reaction लगेगा will be perpendicular to the rod itself, ठीक है। So ये है normal reaction यहाँ, और यहाँ ऐसे लग रहा था, ठीक है। So इस normal reaction को break करना होगा in the horizontal and vertical direction. So here I have done this. तो n इधर है, अब इसका आप देखो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, n sin 30, and what will be in the horizontal sense, that is your n cos 30, ठीक है। And this n cos 30 has to be equal to what? It has to be equal to friction force. Okay. So n is how much? N is root 3, n into root 3 by 2 is equal to friction. So friction is, अच्छा ये फ्रिक्शन का वैल्यू n के टर्म में है या न्यूटन है? मैं ये कंफ्यूज कर रही हूँ यहाँ पे एक्चुअली। दिस इज दिस मच n आई गेस, राइट? नो, इट इज इन न्यूटन आई गेस, ठीक है। ओके ओके ओके, n का वैल्यू दिया नहीं है ना क्वेश्चन में कहीं? n वेरिएबल भी नहीं दिया ना? नहीं दिया, ठीक है। चलो, सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है? √3/2 इंटू n, डन है। न्यूटन में है, हाँ ठीक है। सो यहाँ से मुझे फ्रिक्शन का ये वैल्यू मिल गया। अब देखो n का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो n का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? वर्टिकल इक्विलिब्रियम को चेक कर लेते हैं, क्या पता हमें मिल जाए। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर आप चेक करोगे तो mg इज इक्वल टू क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है n प्लस n साइन 30। सो n साइन 30 मीन्स n/2, सो दिस इज इक्वल टू 3/2n, यानी कि n इज इक्वल टू, यस सारी चीजें सही लिखी ना मैंने? हाँ,
n plus n sin 30, yes. So n is equal to how much? 2mg by 3. ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करो, n का वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे? 2mg बाई दिस थिंग, फ्रिक्शन का वैल्यू अब निकल जाएगा। सेकेंड पेज हम लेते हैं। सो n इज इक्वल टू 2mg/3 है, पहले हम 2mg/3 निकाल लेते हैं। 2mg/3, 2 इंटू m कितना है? 1.6 kg, g कितना है? 10/3। सो दिस इज इक्वल टू 32/3। तो इफ दिस इज 32/3, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन हो जाएगा 32/3 इंटू √3/2, दैट इज इक्वल टू 16/√3। ठीक है, सो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? 16/√3 मैंने लिखा, हाँ यही आ रहा है। सो लेट्स चेक विद द आंसर। हाँ, 16/√3 का मतलब ये ऑप्शन होगा। ठीक है, बट ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। 16√3/3, 16√3/3, सिर्फ ये ऑप्शन रूल कैंसिल आउट हुआ है। डन है। वी नीड टू कैलकुलेट h/l। अब देखो h/l हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम यूज कर लो। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से इजीली h/l मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये वाला, ये हाइट को हमने क्या माना था? h, और इस पूरे हाइट को हमने क्या माना था? l। इफ यू टॉक अबाउट विच इक्विलिब्रियम, I mean rotational equilibrium, let's calculate torque around this point again, because यहाँ से फ्रिक्शन भी जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी जा रहा है। सो इफ यू टेक टॉर्क अराउंड दैट पॉइंट, mg का टॉर्क किधर होगा बताओ? r, mg ऐसे फोर्स लग रहा है, r क्रॉस mg। सो दिस इज बेसिकली mg l/2। इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये थीटा है तो mg l/2 cos थीटा, और डायरेक्शन क्या है? ऐसा। और किसका फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन का। सो यहाँ पे था ये नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से जो भी फोर्सेस जा रहे हैं उसके टॉर्क तो जीरो हो गए, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क अराउंड दैट पॉइंट इटसेल्फ। नॉर्मल रिएक्शन का अगर आप निकालो तो कैसे निकालोगे? यू नीड विच डिस्टेंस? आई मीन दिस इज आर क्रॉस एक्स। डन है। सो दिस डिस्टेंस वी रिक्वायर। हमें नहीं पता ये डिस्टेंस क्या है, एच के टर्म में निकाल लेते। सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स। So h by x is equal to how much? Sin theta. ठीक है, so h is equal to how much? X sin theta. So in that case torque will become how much? क्या लिखोगे? n into h, right? So nx sin theta, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री जा रहा है, एंड दिस इज इन दिस सेंस। सो ये दोनों टॉर्क क्या होने वाले हैं? इक्वल। आप इक्वेट कर दो, mg l/2 cos theta is 60 डिग्री है, राइट? Yes, theta is what? 60 degree. So यहाँ आप cos 60 लिख डालो, and this is your n. N is how much? 16 by, no sorry, n कितना आया था? 32/3, है ना? So n को आप लिख डालो 32/3 into x, how much? X sin theta. Sin 60 is √3/2। ठीक है, cos 60 is half, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड mgl को आप क्या लिखोगे? जैसे यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू नो x, यू कैन, आई मीन यहाँ से x नहीं, x मिल रहा है, यस, यू विल गेट x हियर। देन इफ यू नो x, देन लेकिन हमने ना ऐसे निकाल के थोड़ी सी मुश्किल बढ़ा ली अपने लिए। क्यों? क्योंकि देखो, एक काम करते हैं, x के टर्म में ना लिख के h के टर्म में लिखते हैं ना, दैट विल बी मोर इजियर। तो x को h के टर्म में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ से h/x तुम्हारा क्या था? साइन थीटा। सो x इक्वल टू कितना होगा? h/sin थीटा। डायरेक्टली l और h का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे x की जगह मैं क्या लिखूंगी? h/sin थीटा। लेट मी डिलीट इट। टॉर्क क्या था तुम्हारा? n इंटू एक्स था, राइट? सो n इंटू एक्स की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? h/sin थीटा। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, दिस इज इक्वल टू mg l/2 cos थीटा। नाउ यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो n का वैल्यू आप रख डालो, n 32/3 इंटू h sin 60 √3/2, दिस इज इक्वल टू mg कितना हो गया? 16, l हमें नहीं पता, 2 cos थीटा, cos 60 इज हाफ।
So this will get cancelled by 4 times. So yes, and this again by 8 times. So h by l पूछा था ना, 16 by 3 root 3 something. 3 root 3 by 16 होगा h by l. So 3 root 3 by 16. That is your option D. This is correct one. ठीक है. So ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें दो ही इक्विलिब्रियम पे फोकस करना है. एक होता है रोटेशनल, दूसरा होता है ट्रांसलेशनल. So you should know how to write it. चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. This is very easy. We need to do it. I mean, we can do it within 1.5 minutes something. So you can do it very easily. That is why I will suggest कि आप लोग कर दो इस क्वेश्चन को एक बार. I know we are running out of time, but let's do it. और जो रेस्ट क्वेश्चन बच जाएंगे ना, उस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करके प्लीज पूछा करो. तुम लोग पूछते नहीं हो चीजें. कुछ भी डाउट हो, अगर अगर कर रहे हो, डाउट हो, तो प्लीज लेट मी नो in the big group also. You can ask me, or personally you can also text me, as I have said earlier. ठीक है. You're getting asked new equilibrium position. इस तरह के क्वेश्चन हमने एक बार और किया है कहीं. आई मीन अगर कहीं भी किसी पॉइंट का इंक्लिनेशन पता करना है, वी कैन यूज ट्रेजेक्टरी, राइट? फ्रॉम द सेम लॉजिक, आई मीन सेम थिंग यू विल बी यूजिंग हियर. देखो करना क्या है तुम्हें. बेसिकली मैं समझा देती हूँ. यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है. इनिशियली रेस्ट पे है, बिड इज एट द बॉटम इन इक्विलिब्रियम. नाउ इफ दिस कंटेनर विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, और अगर मैं इसके फ्रेम से इक्वेशन लिखूं, तो ऑन दिस बीड फोर्स विल एक्ट इन दिस सेंस. सो समवेयर न्यू इक्विलिब्रियम विल बी समवेयर हियर. ठीक है. So if it is in equilibrium somewhere here, horizontal and vertical forces should be equal. Now direction horizontal vertical कैसे लोगे? Horizontal direction is always the direction along which it has tendency to move. So it has tendency to move along this plane. So this direction will be taken as x-axis. Then another will become what? Y-axis. Now draw the FBD diagram. सबसे पहले हमें x और y axis को clear कर लेना चाहिए. So if you see here forces acting, mg force will act downward. Ma is already acting in the horizontal direction like this, and there will be normal reaction acting like this. So all these three has to add to 0, right? अगर आप देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका इंक्लिनेशन, अगर ये एंगल सपोज कर लो कितना है, थीटा. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. इट मीन्स mg जो है तुम्हारा वो वर्ट, आई मीन कौन कौन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन कौन से हैं? आई मीन mg इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन. सो mg को ब्रेक करना है हमें, एक तो अलोंग द वाई एक्सिस ऐसे, और दूसरा अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि दूसरा इधर. ठीक है. तो ये एंगल कितना होगा? इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, देन दिस एंगल विल बी योर व्हाट? 90 minus theta. So basically in this side, and force acting will be mg sin theta. Just treat it like inclined plane. ये बीड है inclined plane पे, this angle is theta. So अब ये easy हो जाएगा. देखो mg sin theta is this side. Normal reaction is this side. So normal reaction is already along the y-axis. You don't need to break it.
MA was acting in the horizontal direction, so MA किधर लग रहा था, इधर. अब MA का कंपोनेंट आप निकाल लो, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना होगा, MA cos थीटा, ठीक है, एंड इन दिस डायरेक्शन इट विल बी MA sin थीटा. अब आप इक्विलिब्रियम को लिख दो एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू MA sin थीटा, and if you see here mg sin theta will be equal to what, MA cos theta. So अगर आप ध्यान से चेक करो, m कैंसिल हो जाएगा, A is equal to what, G tan theta. अगर G tan theta है, we have to calculate the new equilibrium position, और उस पोजीशन का डिस्टेंस बताना है वाई एक्सिस से. इट मींस इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, देन डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मींस एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताना है, ठीक है. सो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है. अगर आप यहाँ पे इसका स्लोप निकालोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 2kx. सो dy बाई डी एक्स मीन्स tan थीटा, tan थीटा इज 2kx, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2kx इंटू जी. So x is equal to how much, a by 2kg. So answer will be B. ठीक है. So this is how you can solve such questions. एक बार इसको और सही से प्रैक्टिस कर लेंगे. This is also a very easy question I would say. बस ग्राफ में देखना है, एक ही क्वेश्चन बचा था, ठीक है. So that you should do this question. एक बार करना, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में भी मैं बता दूंगी, ठीक है. चलो, anyone having any doubt? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज we will leave. तुम लोग प्लीज अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. थैंक यू एवरीवन. ओके देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.